Hi guys, welcome to Talking Tech. This is Rohit, and first of all, Happy New Year to you guys. And today we have very special guest with us. So welcome Radha. And Radha, let me tell you about Radha. Radha is employability coach and a career coach, and she helped more than 900 students and professionals to get them their dream job or required to get them their required profession. So Radha, please introduce yourself to the audience, and then we can get started. Hi guys, Happy New Year first of all. And as he said, I am actually an employability coach, and I have been in recruitment before. And right now I'm running my own Instagram with job updates with Radha, and same goes for YouTube. And yeah, I help people getting job. I help them with updates. I help them with their interview rounds and career development, whatever I can do to help today's youth, I guess. So basically in this video we will be talking about like the students and the professional careers, like how should they hunt for a job and how should they apply for a job, and different aspects of like job application mainly, and what are the do's and don'ts they should follow. And since it is coming from an expert who has done research in that, who has real time experience or real world experience with that, and I hope this will be helpful for you guys in your job hunt. So if you fit in this category, watch this video till the end and let's get started. So Radha, my first question is like most of the people right now is facing or maybe disturbed or with the thing that is going on, like recession and layoffs. सो दिस इज़ काइंड ऑफ फियर. सब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस है, स्टूडेंट्स के मोस्टली जो अभी अपने फाइनल ईयर में हैं, जॉब हंट कर रहे हैं, या काइंड ऑफ थोड़ा बहुत प्रोफेशनल्स के बीच में भी कि इतना ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, इतना ज़्यादा लेड ऑफ कर रही है कंपनी, तो कहीं ना कहीं एक जॉब सिक्योरिटी को लेके या जॉब स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के उसमें डाउट है कि स्विच करें ना करें या फिर किस पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन करें. सो व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम कि ये क्या उनके लिए सही रहेगा बेसिकली इस टाइम? Okay, so we are seeing a lot of layoffs, and tech में तो कुछ ज़्यादा ही हमको देखने को मिला. Non tech में तो इतना नहीं था, but tech really मतलब saw it very up close. Even Mang laid off a lot of people, which is actually known to be very stable in the market, but hence recession. So my one advice will always be skills. Like technology is changing way too fast than we can even imagine right now. AI is coming into the scene and everything. In this way, I would like to tell you that take a moment to always upskill yourself. जैसे अभी Zip Recruiter के एक सर्वे के अकॉर्डिंग all of the Mang के लोग जितने भी ये मास ले ऑफ में निकले थे, 80% of them found job within 3 months, because obviously reason भी obvious था, because they were hired by Mang, they were highly skilled professionals. So my first thing that I would say, no matter where you are in life right now, always try to upskill yourself. I'll always try to climb a ladder up, because आप अगर same चीज़ में stuck रह जाओगे तो it's not gonna go in your favor. So you also asked me about should we switch our jobs right now while we are in recession. So I would say that stick around where you are, and if you see your company having better future right now, if you see revenue growth in your company, तो no matter where you are, stick around for a while. At least जब तक ये पूरा scare ख़त्म होता है market का, तब तक at least you should be there. While you are there, don't be disheartened. It's okay. At least you are in secure place. You can upskill for a while. Upskill, that's it. And I would say that yeah, अभी switching को थोड़ा hold on कर सकते हो तो would be better. Yeah, so basically it's a time where you can gather more skills and you can update yourself in terms of tech or non-tech, whatever field you are looking for, and try to gain more skills. And if you have a stability in your job right now, and so try to stick with that, and if you are really looking for the job, then you can go ahead with that also. Like so hirings are going on because company को चाहिए लोगों को अच्छा skills सब लोग देख रहे हैं, so that's why just try to update with your skills and just go on. Depend करता है domain to domain. Yeah, domain, it also depends domain to domain. So just research about your domain first, which domain you are looking into, and then just go ahead with that. Okay, so moving ahead to the second question. So what I saw, like लोग ना जॉब एप्लीकेशन को एक अलग ही अभी भी बहुत पुराने उस वे में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई जॉब आई, लेट्स जस्ट गो एंड अप्लाई फॉर दैट. आई मीन अगर लिंक्डइन में है तो जस्ट यूज लिंक्डइन, इजी अप्लाई, एंड अगर वेबसाइट में भी तो जस्ट गो अहेड एंड यूज द सेम रेज्यूमे यू हैव, just apply for that particular job. Don't look at the job description and all. So what is the correct way to apply for a job? It doesn't depend upon domain. So what is the correct way to apply for a job? Yeah, what is your view on that?
सो आई वॉज इन रिक्रूटमेंट इन बैक इन 2018. वहाँ पे उस टाइम पे वॉक इन्स बहुत होते थे, लाइक यू जस्ट वॉक इन एंड यू टेक योर रेज्यूमे. और हम कंसल्टेंसीज वगैरह वालों के हमारे ऊपर होता था कि वी विल पुट यू इन अ fit role, right? For example, you are coming in with Java or skill something like, so we will schedule your interview for this role. Okay, right, you have the Java. But time has changed right now, okay? Companies are receiving millions of application for one role. In that way, you have to be very strategic. आप अगर हो सके तो एक एक्सेल शीट बना लो, वहाँ पे कंपनी का नाम लिखो, रिक्रूटर का नाम लिखो, देन आपने कैसे अप्लाई किया है. ऑनलाइन भी अप्लाई करो, आई एम नॉट सेइंग आप अप्लाई मत करो, बट मेक श्योर योर रेज्यूमे इज कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड for that job role. Because अभी क्या हो रहा है ना, you will not believe it, but SEO is being used on your resume as well. Let's say Amazon is receiving millions of application for one role. So how will they sort it out? They will sort it out through keywords that you have put in, through the skills you are putting in. So this is how you are going to sort everything out. So make sure that you are using that cloud generator वाला method है ना, कि you are opening a cloud generator और वहाँ पे पूरा job description paste कर दो, and जो वर्ड्स आपको बड़े बड़े दिखाई करें उनको ट्राई करो अपने रेज्यूमे में ऑप्टिमाइज करने का. दैट्स अ स्ट्रेटेजिक वे ऑफ अप्लाइंग राइट नाउ. यू कैन नॉट डू द ब्लाइंड रेस कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करो, देन उसी रेज्यूमे से आप HR के लिए भी अप्लाई कर दो. आप ऐसा नहीं कर सकते हो. ट्राई टू गो मोर विद योर स्किल्स, ट्राई टू बी मोर स्ट्रेटेजिक, देन योर रेज्यूमेज विल बी शॉर्ट लिस्टेड. Yeah, correct. So don't be Arjun, don't try to hit multiple targets with a single arrow. Yeah. So just focused on your field, whatever you are doing, whatever you are looking for, just focused on it and try to search in more deeper way. Let's say try to explore the field properly and just research about it and just go ahead with that. Yeah. This is the right way to apply. And also so हम resume की बात कर ही रहे थे, तो this is also one more important topic that student are mostly I say students are not making or creating in a right way. So how one should create a resume, what is the right way to create a resume and what is let's say a good resume. So mostly हो क्या रहा है कि बहुत सारे हमारे पास resume creator आ चुके हैं जो within 5 minutes you can get your resume. So what I think is like कि ये कहीं ना कहीं problematic भी है, and what is your view on that, like how one should create his resume? So one thing that I really don't do on my Instagram is I tell you about the tools how you can create your resume. And one thing I really don't promote is making a designed resume. Even though you are in design field, I get the argument. आप बोलोगे कि यार हम लोग को creative resume बनाना है and this and that. See, they always have an option of portfolio upload. जितना simple resume बनाओगे उतना better रहेगा, और portfolio upload कर दो. Your resume has to go through it. There's a thing called ATS, and ATS is tracking your resume. अगर तुम उसमें ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भर दोगे ना, तो द वर्ड्स विल गेट डिस्टॉर्टेड एंड दे माइट नॉट रीड ऑल योर कीवर्ड्स एंड दे माइट रिजेक्ट यू फॉर द रीजन दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू बीइंग very creative. So no matter what any influencer or career coach is telling you out there, try to make your resume in simple Google Docs or Word file. उसमें simple resume बनाओ. First thing, like very simple as possible. Try to make it like that. Okay. Second thing that I would say is focus on highlighting your skills according to the job. Okay. Job जिसके लिए आप apply कर रहे हो, उनकी जो keywords होते हैं, try to optimize that in your resume. Use XYZ method. This was actually given by Google Recruiter. आप एक बार Google कर लेना and उसके हिसाब से अपने experience को करो. Try to oversell your experience as much as you can, because you are your best advocate and salesmen out there. Okay, nobody is going to come and say कि हाँ this candidate is the best. You are going to say I am the best candidate you can get. So try to oversell as much as you can. And third thing about resume that we were talking about was try to name resume properly. Like, that is the most important thing. Don't make it like resume maker 1, Radha resume 1. If I will be applying for a job role and if I'm going for social media manager or marketer or digital marketer, anything, Facebook ads manager, I'll always write Radha ad manager resume. This is how I will name it. Okay, so what will happen that आज recruiter आया, जैसे नौकरी पे क्या होता है कि वो लोग आपके रेज्यूमे डाउनलोड करके रख लेते हैं अपने डेटाबेस में. आज रिक्रूटर आया, आज ने उसने सोचा मैं सिर्फ रेज्यूमे डाउनलोड करके रख लेता हूँ,
कल आऊँगा वापस से इन रेज्यूमे को सॉर्ट आउट करूँगा। अब उसने रेज्यूमे डाउनलोड कर लिया, वो 3-4 रोल्स के लिए हायर कर रहा है, परसों बैठा उसने देखा चलो ये लड़की सोशल मीडिया मार्केटर के लिए आई है, इसको अलग से हटा दो, इसको हम सोशल मीडिया मार्केटर के अपलोड, तो उनका काम सॉर्ट आउट करो। लिसन, देयर इज लॉट रिक्रूटर हैज़ टू गो थ्रू, जितना आप उनके लिए ईजी करोगे उतना बेटर इंप्रेशन बनेगा उन पे। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग। First is make simple resume. Second, try to oversell, try to tell everything that you did. Don't lie, obviously, always tell truth because वो circle around कर लेते हैं. And third thing is name your resume properly. Name your resume properly if it's possible. Yeah, so basically make your resume precise and to the point also, and keep it simple as possible. Yeah. I think you should give proper time to your resume. If you are investing, let's say 100% in your job application, so I say 20 to 30% you should give in making your resume properly. Exactly. And you should you should update it for every single job that you are applying to. Specifically for that keywords that are in the job description, you should update your resume with Exactly. that. And yes, third thing is the naming. So keep your resume naming properly. Let's say your name and the role you are applying to, or let's say your name and the resume at the end. So Yes. this is like the correct way. So yeah, this is the thing about the resume. ओके, सो बेसिकली आपके ईज़ के लिए मैं एक रेज्यूमे का फॉर्मेट डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, बट ट्राई टू मेक इट योर ओन. Yeah, that will be much better for you. So let's move to the next question, and this is one important one that also I got from the students, and maybe you may also have heard this same question. So problem क्या है कि लोग बहुत सारे कोर्सेज करते हैं एंड उसमें उनको प्रोजेक्ट्स भी सिखाए जाते हैं एंड बहुत स्किल सेट भी सेम है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया है एंड लोगों के पास, एंड लोग अप्लाई भी कर रहे हैं जॉब एप्लीकेशन में, अप्लाई भी कर रहे हैं जितनी भी एप्लीकेशन आ रही है, तो एक तरह से लोग सब सेम चीज़ें कर रहे हैं एंड रिक्रूटर के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो चुके हैं. तो ऐसे में क्या करना चाहिए टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, लाइक व्हाट शुड यू डू लाइक टू इम्प्रूव और एनहांस योर एप्लीकेशन? Okay, the first thing I would like to say, there's nothing wrong in sticking to routine also. Yeah, even my brother recently got a job by simply applying to jobs on Naukri. But again, he had a strategic approach that at least वो अपने ही सारे डोमेन के at least 40 to 50 jobs वो दिन में अप्लाई करता था. So there is nothing wrong in that. What I see. It's okay if you don't want to be an extraordinary person or something, because jobs hai market mein. That's what I'm trying to convey here. But if you want to stand out, if you really want to stand out, if you want to reach at that अच्छे level का, have a lot of offer or something, so this is where you can focus on one thing, creating your personal brand. This is like very important. Like market में आपको जानते कैसे हैं, आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं. And when it comes to personal brand, everybody will say जाओ जाके LinkedIn पे पोस्ट लिखो और बताओ कैसी हमारी ज़िंदगी सक्सेसफुल है, कैसे हमने 30 दिन में DSA की कोडिंग सीख ली. So no, personal branding is not just about posting content online. It is one of the part, but it's also about how you are introducing yourself to people. Like if you Google yourself, does your LinkedIn come out? So no, you have to personalize your LinkedIn accordingly. Okay, you don't have to post a content. Like if you do, it's a good ad, but I wouldn't say कि आप content creator बन जाओ. And yeah, another thing is that you can reach out to recruiters. You can introduce yourself. You can tell them कि hey, listen, I see that you are a tech recruiter and I have this experience, or I have these skills and I have done these projects. Here are my projects. If there is anything in your company, or if they have already posted a job opening, send them the link of the job कि this is the job I am applying for. Are you guys still hiring? So this can be a good strategic way if you don't want to stick to the same routine. But I have seen people getting very good job with that. And इससे क्या होता है ना, आप मार्केट में अपने लिए एक अर्जेंसी क्रिएट करते हो. आपने इस रिक्रूटर से भी बात की, इस रिक्रूटर से भी बात की, इस रिक्रूटर से भी बात की, लेट्स से उसमें से 2 ने ऑफर दे दिया, आप compete कर लोगे कि कौन बेस्ट ऑफर दे रहा है. आप ऐसे में बेटर कंपनीज को टारगेट कर सकते हो, दैट्स फॉर श्योर. तो अगर आपके पास कुछ अच्छे स्किल सेट्स हैं, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आई वुड से इट्स टाइम आप पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कर लो. अपने प्रोजेक्ट्स को आउट देयर पोस्ट करो, अपने लिंक्डइन पे डालो उनको, अपना लिंक्डइन अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, वेल ऑप्टिमाइज करो, ताकि जब भी कोई सर्च करे वो कीवर्ड तो आप आओ. सो दिस इज अ डिफरेंट वे यू कैन ऑल्सो अप्रोच टू रिक्रूटर्स. या आई टोटली एग्री विद दैट. एंड आई थिंक इससे ना एक और फ़ायदा रहता है कि तुम्हारा पर्सनल
मोरल भी बहुत अच्छा बूस्ट होता है. So back in the days when I used to do projects and all, so I regularly post on LinkedIn and I was gaining too much confidence कि हाँ ठीक है मुझे आता है, and I mean good in that. So कहीं ना कहीं वो तुम्हें help भी करता है, I mean to get your job or maybe in your interviews also. And the second thing is like connecting with the different people of the different companies give you a vast idea of like what the things are going, what they are looking for and what are the things going on. And third mainly thing regarding referral के लिए कि जो बहुत लोग गलती करते हैं, same thing is like reach out to people and just ask them कि if you have any open job position just refer me. And this is wrong I think, and बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता, maybe इसलिए भी रहता है. So for referral the best way is this. You have a job ID for any particular company, just find a job and go to a person which is working in that company or maybe HR, just send them the job ID and send them a personalized message ki sir I am this and this and I am looking for this particular role and this role is open in your company, can you refer me for that. we are circling back कि आप रिक्रूटर्स के लिए चीजें कितना इजी कर सकते हो. आप सोचो यार मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, लिंक्डइन पे हैंग आउट कर रही हूँ, मुझे आके कोई बोल रहा है कि अरे अपनी कंपनी में जॉब ढूंढ दो हमारे लिए. अब मेरी कंपनी ने 100 जॉब पोस्ट किए होंगे, मैं तुम्हारे लिए जॉब क्यों ढूंढूंगी बैठ के. सही में यू आर अ स्ट्रेंजर टू मी, बट इफ यू जस्ट सेंड मी द आईडी ना, तो मुझे भी मजा आएगा कि हाँ इसने भेज दिया, अब मैं चलो इसके लिए ऑलरेडी वो कर देती हूँ. मुझे ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है क्योंकि यू आर अ स्ट्रेंजर टू मी, आई एम अ स्ट्रेंजर टू यू, वी डोंट ओ ईच अदर एनीथिंग. सो या यू हैव टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर अदर. सो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही. हमने इस वीडियो में जाना कि बेसिकली कैसे आप अपने जो भी आपकी जॉब हंट है उस प्रोसेस को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो एंड टेल मी इन द कमेंट्स कैसी लगी आपको ये वीडियो एंड क्या क्या ये इससे आप लेके जा रहे हो एज एन एक्सपीरियंस और एज अ प्लस पॉइंट. एंड ऑल्सो इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक एंड डू सब्सक्राइब टू जॉब अपडेट्स विद राधा. ओके गाइस, सब्सक्राइब टू हिज चैनल टॉकिंग टेक. इसको मैं अभी बोल रही हूँ, कोडिंग सिखाना चालू करेगा वो यहाँ पे. लेट अस नो इन कमेंट्स व्हाट डू यू वांट टू लर्न इन कोडिंग. ही विल मेक द वीडियो. आई विल मेक द वीडियो, दैट्स फॉर श्योर. हाँ. Okay. Thank you guys. Thank you so much. Thanks Radha for being with us. Thank you for having me. Have a good day.